Yes, which control we have students covered in the last lecture? Uh, Ma'am, radio box. Sorry. Which control? Ma'am, radio. Okay. Okay. In the last lecture, we have covered the radio button, checkbox button. So radio button and checkbox button. Radio button list we have already covered in the previous lectures. Okay. Wait. This two controls, checkbox controls and the radio button controls, which we had covered in the last lecture. Checkbox control is used to get the multiple inputs from the user. And radio button is used to get the single input from the users. Means we can select only one option from the checkbox list radio button, and we can select the multiple options from the checkbox button. So these are the properties which we have covered in the last lecture. Access key is used for shortcuts. Okay, we have already seen in the last lecture. Then tooltip property is new for you. Okay, tooltip matlab kya, whenever we set the text in tooltip property, so it display the text when mouse is over the control. Okay, and this also we had covered. Okay, the small program which also we have covered in the last lecture related to checkbox. Okay, this is checkbox control, not the checkbox list control. Checkbox list control we will learn today. And this is a radio button. Okay, the properties are common for radio button. Okay, radio button related example we have also done. Okay, and one more control we have covered, a radio button list. Okay, radio button list. Okay, repeat directions. Okay, these are the properties of radio button list. What is the repeat direction properties? What is the repeat direction properties, students? What is the repeat direction properties of repeat radio button? मैम, हाँ. जो वर्टिकल रहता है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और जो हॉरिजॉन्टल है वो वर्टिकल हो जाएगा. Very good. Okay, so repeat direction मतलब it change the direction of the control, horizontal and vertical. This property have two values, vertical and horizontal. Very good. Okay, so this program also we have done in the last, in the previous lectures. Last, I think last to last lectures, we have done this. Okay, so radio button list already we have covered. You have to remember the properties and methods of all the controls. Okay, don't get confused. You have to write in your notebook, okay, during the lectures time, so you will not get confused कि कौन सा control के लिए which property is there, which method is there, how to write the code. Okay, so please, so radio button list we have already done. Okay, so इसको मैं I am closing this application. Okay, radio button, simple radio button checkbox also we have done in the last lecture, so I am again closing this. Checkbox list is remember. Okay, what is the difference between checkbox and checkbox list? The difference is that checkbox list is used to it is a group of checkbox. What is, sorry, checkbox list is a group of checkbox. So if you add the checkbox list controller, so you can add multiple items in the checkbox list. And what is a checkbox? So when you will take checkbox, now you can add only one item. Suppose you want to add 5 items. If you are using the checkbox control, so you have to add 5 different checkbox. Okay, 5 different checkbox you have to add when you are using the checkbox control. And if you want to use checkbox list, so you will take the checkbox list once, and in that control you can add the multiple items from the property. So this is the difference between checkbox list and checkbox. Same for the radio button and the radio button list. Okay, list means kya, group of, okay, list means kya, group of something. So this is a checkbox list. The checkbox list class is derived from the class system.web.ui. Web controls dot list controls. Okay, all are the list controls. जो controls हम लोग currently पढ़ रहे हैं ना, all are the list controls. Which are the list controls? List box, radio button list, checkbox, checkbox list, and drop down list. All are the list controls. ये सारे कौन से controls हैं? List controls. Okay, remember students, all are the list controls. अगर I am asking the questions, okay, which are the list controls? तो कौन से list controls है? Checkbox, checkbox list, radio button list, list box,
ओके, जो हमने सबसे पहले किया था, फर्स्ट कंट्रोल वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द लिस्ट बॉक्स, हमने स्टार्ट किया था लिस्ट बॉक्स एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट, ऑल आर दी लिस्ट कंट्रोल्स, इसको क्या बोलते हैं, लिस्ट, ये सारे कौन से क्लास में अवेलेबल है, कंट्रोल्स, लिस्ट कंट्रोल्स, ओके। ASP.NET checkbox list is web control that can be used to collect items that can check, thus giving the ability to user to select multiple items. We know what is a checkbox list. Okay. Then how to create the checkbox list? Checkbox list कैसे create करते हैं? Double click करो on the control in the toolbox. Otherwise, you can also do the drag and drop. आप drag and drop भी कर सकते हो. Otherwise, you can do from the source code. So you can write like this: ASP checkbox list. Give some ID. What is auto post back? Uh, I will tell you. Okay. तो and run at server. क्या लिखना है? Run at server. Okay. Checkbox list id, give some id and run at server करोगे तो your checkbox list will be created. Okay, so this is a checkbox list. If you want to add items, okay, checkbox list में आपको items add करना है तो list item properties है. Okay, list item properties है, so you can add the items in the checkbox list. Okay, these are the properties of checkbox list. Cell padding property. What is the cell padding property? Set the distance between content of cell. Repeated item count, show the total number of items in the list. Repeat columns, get the number of columns to display in the checkbox list. Repeat direction, okay, same है, check जो रेडियो बटन लिस्ट के लिए है वही है. Cell spacing, it can be used to set the distance between two cell of checkbox list. Has footer, checks if the checkbox list has footer section. This is a boolean property, false indicating no footer. Header, header section है कि नहीं. Has separation, checks if the checkbox list has a separator between the items in the list. Okay, items in the list, this is a boolean property. False indicating मतलब no separation. ठीक है. Render when data empty, this property gets the value or set the value for condition when there is no data in the data source. Okay, true indicating मतलब when we are retrieving the data from the database into this control. Okay, at that time we have to use this property. अब इसकी जरूरत नहीं है because database हमने start नहीं किया. Text align, specify the alignments of the items in the checkbox. Items, get the collection of the items from the list. Okay, auto post back if set true, so auto post back will occur whenever the user select checkbox in the list. Okay, ठीक है, हम लोग देखते हैं, we will see checkbox list. Okay, this is a checkbox control. ये हमने कौन सा किया था, checkbox control. Now today we will do the checkbox list control. Which control? Checkbox list control. Okay. एक मिनट, इसको क्या हो गया अभी. In the last lecture we have done with this example. Properties we have set. Okay, tooltip property we have set. Then access key property also we have set. Okay, so you have to remember all the properties. Tooltip property, access key, font, background, all properties are common to all the controls. तो सारे controls के लिए same properties हैं. Okay, तो जैसे हमने checkbox के लिए किया, same you can do for other controls also. Yes, which is a extension of coding page, student. Coding page का extension क्या होता है? It is extension of code page in ASP.NET. Okay, now I am taking new web form. Go to the Solution Explorer window. Click on Web Application. Right click on Web Application. Add new item.
Select the web form, change the name. Checkbox list example, new web form. Okay. Yes, हाँ, what is the extension of coding page? चलो बताओ, कोडिंग पेज का एक्सटेंशन क्या होता है? JSP.NET. Hmm. What is the extension of coding page? Code behind file, or you can say code behind file. I will ask this type of question in MCQ. क्या होगा एक्सटेंशन? क्या, जैसे डिजाइनिंग के लिए .aspx इज एक्सटेंशन, कोड के लिए क्या होगा? हम्म, कोड के लिए क्या एक्सटेंशन होगा? कोड फाइल के लिए मींस .cs. यस, .cs. वेरी गुड. ओके, तो ये याद रखना, ये सारी चीजें, ऐसे ही क्वेश्चन होगा in the MCQ exam में. So here you can see aspx.cs मतलब this is a coding file. .aspx मतलब designing file. Okay, cs मतलब coding file. Every page has two files. Okay, the first is designing and the second is code file. Both files will be automatically generated. Okay, now I am taking, first of all I am taking label. Okay, then checkbox list. Checkbox list. Yes, have you installed in your system and read the programs? Yes or no? Hmm. Yes, ma'am. Okay. हो रहा है general programs? Any doubt? हाँ मैम, हो रहा है मैम. ये बाकी सब, बाकी स्टूडेंट्स, नशरा, अब इंस्टॉल किया कि नहीं? हम्म, मैम बस डिफॉल्ट पेज है ना मैम, इसमें हाँ. वो नहीं आ रहा. हाँ, नहीं आएगा, नहीं आएगा, बिकॉज वो 2010 का वर्जन है ना, मेरा ये न्यू है, इसीलिए वर्जन अलग है ना, इसीलिए मैंने सेटअप जो किया आई थिंक वो 10 का है, तो उसमें नहीं आएगा. ओके, ठीक है, दिस इज लेबल. सेटिंग द प्रॉपर्टीज. एक्स प्रॉपर्टी लेबल का this is checkbox list example. I am giving the heading of this page. Okay, okay. Now font bold, color, okay, and size. Checkbox list example. Okay, this is your checkbox.
is a checkbox button. Even items, from the items controls, every list control has the same property. Which property? Item properties are, because all are list controls. ये सारे list controls है. Radio button, list box, checkbox list, radio button list, all are the list controls. Every list control have the item properties through which you can add the items. Okay. Add any items. Items. Okay. Then Linux. ये सब लोग एक साथ ज्वाइन क्यों नहीं करते हैं? Okay, so I have added 3 items in the checkbox list. This is a checkbox list, so I can add the items from the item properties. If you will take the only checkbox controls, so you have to add 3 different checkbox control for the 3 different items. Okay, but this is a list control, so we can add the multiple items in a single checkbox list control. Okay, so this is a difference. You should remember the difference. Okay, this is a property of button. Okay, see, चलो पहले properties देख लेते हैं. Okay, which are the properties of checkbox list controls? The same properties जो हमने checkbox के लिए पढ़ा. Okay, more properties also there. Cell spacing, cell padding, ठीक है. Then repeat directions वगैरह all are the common properties है. So you can use at your home. ठीक है, please आप उसको देखो and search उसको use करो. ठीक है, क्योंकि इतना properties हम लोग करने जाएंगे तो it will take times. Okay, horizontal हो गया. vertical. सेल स्पेडिंग कितना स्पेस होना चाहिए? ठीक है, -1 है. इफ आई एम राइटिंग हियर 2. ओके, तो स्पेस जो है, स्पेस सेल स्पेसिंग, स्पेस जो है उसका, द स्पेस इज चेंजिंग. बाकी जो प्रॉपर्टीज है, टूल टिप प्रॉपर्टी लिख दिया. तो व्हेनेवर आई विल कंट्रोल लेके जाऊंगा उस पर, तो हाई विल बी डिस्प्ले. ओके, बाकी जो एक्सेस की, इंडेक्स प्रॉपर्टी. ओके, नाउ यू नो main is the item property through which you can add the items. Okay, flow, so this is flow. Okay, same है जो हमने किया ना for checkbox control, list box control. Sorry, हाँ, रेडियो बटन के लिए सेम प्रॉपर्टीज है. ओके, नाउ दिस इज a बटन प्रॉपर्टी के लिए. ओके, 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 when you will click on this button, ना यहाँ पे select item डिस्प्ले होना चाहिए. नाउ अब बताओ मुझे what I will write code. What should I write the code यहाँ पे? I want to display the items when user click on OK button. जो भी selected items होगा ना, all items should be displayed in this label. Okay, this is checkbox list. तो क्या use करना पड़ेगा मुझे coding में? How to write code? And which type of code I have to write? बताओ मुझे, चलो. बहुत सारे programs किए ना हम लोगों ने. Tell me, क्या code करूँगी मैं यहाँ पे? buttons once की click में I want to write code like that कि whenever user select these items and click on OK button, तो selected items should be displayed in this label. तो क्या कोडिंग मुझे करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? क्या कोड करूंगी मैं? चलो बताओ. क्या ना, बहुत रेडियो बटन के लिए क्या हम लोगों ने, चेक बॉक्स के लिए वी हैव डन, लिस्ट बॉक्स के लिए वी हैव डन. ओके, रेडियो बटन लिस्ट के लिए वी हैव डन. चलो,
हम्म, चलो बताओ, व्हाट विल बी द कोडिंग, कोडिंग क्या होगा? इतना सारा किया हम लोगों ने कोडिंग, नो यू शुड नो। हम्म, चलो बताओ, स्टार्ट तो करवा मुझे। अभय, जेरोल्ड, नशरा, वो स्टूडेंट्स है, सूर्या, हाँ, अबू बकर। बताओ क्या लिखूंगी मैं? जो होगा रॉन्ग होगा तो उसको हम लोग करेक्ट करेंगे। आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या कोड यहाँ पे हमको लिखना चाहिए? टेल मी फास्ट। जो भी जितना भी समझ में आ रहा है, एरर होगा तो एरर हम लोग रिमूव करेंगे, ठीक है? जो भी कुछ लॉजिक होगा वो चेंज करेंगे अगर गलत है तो, बट ट्राई। क्या लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे? आई वॉन्ट टू डिस्प्ले आइटम्स इन लेबल्स व्हेन यूजर क्लिक ऑन दिस बटन। क्लिक ऑन दिस बटन के लिए तो हमने ओके बटन जो है उसका क्लिक इवेंट हमने ओपन कर दिया। नाउ अब वी हैव टू राइट कोड, विच टाइप ऑफ कोड के लेबल में डिस्प्ले करवाना है, क्या डिस्प्ले करवाना है? सिलेक्टेड आइटम, चेकबॉक्स लिस्ट में जो भी आइटम सिलेक्टेड है वो हमको डिस्प्ले करवाना है। तो क्या करेंगे? हम्म, हम्म, इफ कंडीशन लिखेंगे कि क्या करेंगे बताओ? कि डायरेक्टली चेकबॉक्स लिस्ट। आई एम इंट। ओके, इंट किसके लिए लिखेंगे बताओ मुझे? चलो आई एम टाइपिंग द इंट, एक मिनट। हाँ, इंट, देन चलो बताओ। हम्म, बताओ, चलो आई एम वेटिंग स्टूडेंट। बराबर लिख रही हो कि नहीं? होंगे, राइट है। अगर ऐसे ही करोगे तो फिर मैं नई प्रोग्राम्स करूंगी। लेबल टू डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू चेकबॉक्स लिस्ट वन डॉट सिलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट। रॉन्ग है कि राइट है? क्या लिखा मैंने? लेबल टू जो है दैट इज, दिस इज लेबल टू। ओके, लेबल टू डॉट टेक्स्ट में क्या डिस्प्ले होना चाहिए? चेकबॉक्स लिस्ट, दिस इज अवर चेकबॉक्स लिस्ट। वन डॉट सिलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट, दिस इज राइट और रॉन्ग? जो भी आइटम चेकबॉक्स लिस्ट में सिलेक्ट किया ना वो डिस्प्ले होना चाहिए लेबल टू में। रॉन्ग है कि राइट है? यस और नो? आई एम राइट। राइट है, ठीक है। इसको हम लोग रन करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं। Yeah, running this without it. Yes, all are the basics coding students. You should know. Okay, ये बेसिक ही आना ही चाहिए। इसमें कोई नेट पे सर्च करने की जरूरत नहीं है कि क्या कोड होगा क्या नहीं। दिस इज बेसिक, यू कैन डू अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको करना है। ट्राई करोगे तो होगा, लॉजिक लगाओगे तो होगा, अदरवाइज तो फिर मैम करिए कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट तो फिर कॉपी पेस्ट ही करोगे। जितने भी कंट्रोल्स मैं करवा रही हूँ आपको, उसको वो कंट्रोल्स घर पे प्रैक्टिस करना है, एंड उसमें कुछ एडवांस भी आपको करना है। एंड ये जो कंट्रोल्स हमने यूज किया है ना, इंडिविजुअली, रेडियो बटन, चेकबॉक्स, यू कैन यूज इन सिंगल पेज आल्सो। ठीक है, ऐसे नहीं कि अलग अलग पेज में करना है। ये तो आपको समझ में आए, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग ऑल दी कंट्रोल्स इन डिफरेंट पेजेस। यू कैन डू ऑल दी कंट्रोल्स विद इन सिंगल पेज में, आप कर सकते हो डिजाइनिंग। ठीक है,
एक ही पेज में आप कर सकते हो ये सारा, वो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए आई एम डूइंग डिफरेंट डिफरेंट पेजेस में मैं ले रही हूँ। ठीक है, अदरवाइज आप एक ही पेज डिजाइन करोगे उसमें यू कैन यूज ऑल द कंट्रोल्स। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, फॉर इंटीजर I इक्वल्स टू 0 I checkbox list 1 dot items dot count I plus plus, then if checkbox list 1 dot items dot selected है तो प्रिंट करवाओ चेकबॉक्स लिस्ट 1 items I डॉट टेक्स्ट। ओके, हम हमने क्या कोड किया है, हमने यहाँ पे उन्होंने फॉर लूप यूज किया है। ओके, दे आर यूजिंग फॉर लूप एंड हमने विदाउट फॉर लूप हमने किया है। तो व्हाट इज द डिफरेंस देखते हैं पहले, जो हमने कोडिंग किया है उससे क्या आउटपुट आ रहा है। ओके, फिर हम लोग ये वाला कोडिंग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक व्हाट विल बी द आउटपुट, जब हम लोग वैसे लिख रहे हैं तो क्या आउटपुट आ रहा है। हमने क्या लिखा है, सिंपल लेबल टू डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू चेकबॉक्स लिस्ट 1 डॉट सिलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट। ओके, ये हमने कोडिंग किया है। वेट, वो रन हो रहा है। ओके, सी checkbox list example dot ascripts। ओके, ये नेम मैंने दिया था एट द टाइम ऑफ सिलेक्टिंग द न्यू वेब फॉर्म। शाहजाद, व्हाई आर यू लेट? लेक्चर खत्म होने आया शाहजाद, तभी आ रही लेक्चर में। मैंने क्या लिखा, लेबल टू डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू चेकबॉक्स लिस्ट 1 डॉट सिलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट। ठीक है, वैसे मैंने लिखा है। देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है उसका, करेक्ट है कि रॉन्ग है। ये आपके सिस्टम में हो रहा है क्या जल्दी जरूर? ओके, हाँ मैम। ओके। ए डब्ल्यू पी सिलेक्ट किया, जावा सिलेक्ट, ए डब्ल्यू पी सिलेक्ट किया, ओके बटन पे क्लिक किया, ए डब्ल्यू पी आ रहा है। ठीक है, ओके। जावा सिलेक्ट किया, ओके बटन पे क्लिक किया, तो क्या आ रहा है, ओनली ए डब्ल्यू पी आ रहा है। नाउ इट्स डिस्प्ले जावा। लिनक्स क्लिक किया एंड ए डब्ल्यू पे आई एम सिलेक्टिंग, ओके बटन पे क्लिक किया, तो एक ही आइटम आ रहा है ए डब्ल्यू पे। व्हाट वी वांट टू डू के ऑन व्हाटएवर आइटम वी हैव टू सिलेक्टेड ना, ऑल आइटम शुड बी डिस्प्ले ओके इन दिस लेबल। बट अभी यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्या हो रहा है, ओनली वन आइटम इट इज डिस्प्ले। व्हाई, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों हो रहा है? मैम एक ही का कोडिंग किया है मैम। कोडिंग एक ही का किया है, बट कहाँ पे चेंज कर सकते हैं, हमने कोडिंग तो बराबर किया है। लेबल टू डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू चेकबॉक्स लिस्ट, चेकबॉक्स लिस्ट 1। चेकबॉक्स लिस्ट 1 क्या है, ये एक ही चेकबॉक्स है ना, ये लिस्ट तो एक ही है। चेकबॉक्स लिस्ट 1 डॉट लिस्ट 1 डॉट सिलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट। ओके, मतलब चेकबॉक्स लिस्ट 1 में जो भी आइटम हम लोग सिलेक्ट करेंगे वो डिस्प्ले होना चाहिए लेवल 2 में। ओके, वैसे हो रहा है, बट ओनली वन आइटम, कोई एक ही आइटम वो डिस्प्ले कर रहा है।
ठीक है, वाई, क्योंकि हमने क्या किया है, वी आर यूजिंग द चेकबॉक्स लिस्ट कंट्रोल। हमने कौन सा कंट्रोल यूज किया है, चेकबॉक्स लिस्ट कंट्रोल। सो चेकबॉक्स लिस्ट कंट्रोल है तो एक ही लिस्ट में बहुत सारे आइटम्स है, तो उसके लिए वी हैव टू राइट फॉर लूप। हमको क्या लिखना पड़ेगा, फॉर लूप वी हैव टू राइट। ओके, वाई, बिकॉज हमको वो आइटम्स लिस्ट बॉक्स में जितने भी कंट्रोल्स है वो कंट्रोल्स यूजर सिलेक्ट करेगा, देन ऑल कंट्रोल्स जो है वो, सॉरी, ऑल आइटम्स जो है, आइटम शुड बी डिस्प्लेड फॉर दैट। क्या है ये, स्टॉप नहीं किया था। ओके, यस, नाउ मुझे यहाँ पे कोड आई हैव टू राइट। ओके, सॉरी, लूप आई विल राइट, या तो फोर लूप यू कैन राइट। ओके, फोर लूप you can write. So, okay, same line I am writing in the for loop for integer I equals to 0. Okay, now अभी अभी क्या लिखूंगी मैं, नाम इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट में कंडीशन नहीं देना है मुझे, कुछ कंडीशन प्लस देना प्लस। पड़ेगा। क्या कंडीशन दूंगी, आप लोग देखते नहीं हो। हम्म हम्म क्या कंडीशन दिया है यहाँ पे, आई लेस देन चेकबॉक्स लिस्ट वन डॉट आइटम्स डॉट काउंट काउंट। ओके, आई प्लस प्लस, ठीक है, क्या कंडीशन दिया है, चेकबॉक्स लिस्ट वन डॉट आइटम्स डॉट काउंट, मतलब चेकबॉक्स लिस्ट में जो आइटम्स है उसका जो काउंट है वहां तक वो डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। ओके, आई होप समझ में आ रहा है सबको। चेकबॉक्स लिस्ट वन डॉट आइटम्स, आइटम्स, हाँ आइटम्स डॉट काउंट काउंट। ओके, एंड आई प्लस प्लस। ओके, आई प्लस प्लस, एक लूप हमने क्या लिखा कि फोर लूप तब कहाँ तक हमको लेके जाना है, जब तक आइटम्स है। ओके, इंटीजर आई गोस टू 0, चेकबॉक्स लिस्ट वन डॉट आइटम्स डॉट काउंट आई प्लस प्लस, जब तक आइटम्स, जितना भी आइटम्स है आइटम्स तक जाएगा। बट क्या डिस्प्ले करवाना है, इफ लिस्ट बॉक्स वन, सॉरी चेक बॉक्स वन में जो सिलेक्टेड आइटम 10 आइटम्स है, बट इफ यूजर ने 10 में से ओनली 5 आइटम्स सिलेक्ट किया है, तो 5 आइटम्स ही डिस्प्ले होना चाहिए ना। तो यहाँ पे ऊपर कंडीशन में क्या किया कि ऑल आइटम्स काउंट तक हो जाएगा, बट क्या करवाना है कि जो यूजर जो आइटम सिलेक्ट करेगा, ओके, इफ चेक बॉक्स लिस्ट वन डॉट सिलेक्टेड आइटम्स, ओके, एक मिनट, सी, इफ checkbox list ones dot items I dot selected, okay, items I dot selected items, okay, list box one dot items I dot selected, अगर selected है, then after आपको क्या करवाना है, you have to print the items, okay, that means display the items where into the label 2, into the label 2. Now this is a perfect coding, okay। पहले हमने क्या किया, जितना भी आइटम्स है ऑल आइटम्स हमने क्या किया, उसमें सेट कर दिया, आइटम 0 1 2 3 4 5 लूप तब तक जाएगा, देन वी हैव टू चेक कि जो आइटम्स है